Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma. So here today we are going to start with a very important topic, that is trans fatty acids, which is in news also in the Hindu newspaper. So it becomes very important for us to cover this topic for the preliminary part. The class PDF will be uploaded on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. क्लास का PDF आपको Telegram चैनल से मिल जाएगा. आइए पढ़ते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कितने हार्मफुल होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट साइमल्टेनियसली इन द क्लास. माई जॉब इज टू कवर द टॉपिक्स होलिस्टिकली फॉर यू. योर जॉब इज टू रिवाइज देम एंड मेक नोट्स अकॉर्डिंगली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर all of you. Here in this announcement, it is about Unacademy Summit 2.0 that is going to be launched from Feb 20. It's a 2-day conclave. Feb 20 और 21st को ये conclave होगा. It's a free summit for all of you wherein 80 plus speakers are going to be present in the summit. There will be talks, discussions. They are going to help you. There are MPs, IFS officers, IS officers, UPSC toppers, Unacademy educators who are going to conduct hands-on workshops. They are going to help you in simplifying your journey. They are going to solve all your doubts regarding the preparation journey in UPSC CSE. 2 insightful days, iconic speakers, talks and discussions and workshops, all for all of you, free of cost. 21st Feb को होगा. जल्दी से register कर लीजिए. Link is given below in the description box. Okay, so let's start the class without any delay. First of all, you should know that our body requires only 2 kinds of healthy fats. हमारी बॉडी को 2 तरीके के ही healthy fats चाहिए होते हैं. First is monounsaturated fat and second is polyunsaturated fat. And we all know that the healthy fats, they are major source of energy because they help your body to absorb the vitamins and minerals from the food that you are intaking or from the water that you are drinking. Right? So what are monounsaturated and polyunsaturated? So monounsaturated fat is a type of dietary fat. It is one of the healthy fats, okay? And this monounsaturated fat is found in nuts or canola oil, avocados, nut butters, olives, peanut oil, almonds, cashews, right? Olive oil. इन सब में आपको monounsaturated fat मिलता है. What is polyunsaturated fat? It includes omega-3 and omega-6 fats, and they are essentially fatty acids that the body needs for the brain to function and for your cell growth also. आपके brain को function करने के लिए, आपके cell के better growth के लिए body में ये आपके polyunsaturated fats चाहिए होते हैं. प्लस ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल दैट मीन्स इन विच फूड और इन विच ऑयल दिस पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इज फाउंड. इन कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल. इसके अंदर आपको मिलते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट. ठीक है, तो ये 2 तरीके के हेल्दी फैट्स होते हैं. बट ऑल्सो देर आर अनहेल्दी फैट्स ऑल्सो, हार्मफुल फैट ऑल्सो, दैट इज नोन एज ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट्स और TFAs. So there are 2 types of trans fats. First is naturally occurring and second is artificial. Naturally occurring means the trans fat which is found in baked and fried food, which is found in dairy products. जो आपके dairy products में cheese में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है और red meat में पाया जाता है. Over here you can see that is the naturally occurring trans fat, which again is not that much harmful for your body, but the artificial trans fat is very harmful, right? ये बहुत harmful होता है. It is when the hydrogen is mixed into the liquid vegetable oil. Okay, so this is used to make food more solid, to increase their shelf life, to use as an adulterant. In burgers you can see, in fried food आप देख सकते हो, baked food में, fried food में पाया जाता है adulterated ghee, right? जो कि room temperature पे solid हो जाता है. So this artificial trans fat can clog your arteries, increase your BP or also cause obesity, right? Heart disease, etc. So what happened that in 2004 now Denmark became the first country to limit industry trans fat content in all the foods to 2%. यानी कि डेनमार्क पहली कंट्री बनी थी 2004 में. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने लिमिट किया था ट्रांस फैट का कंटेंट हर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट में 2% तक. ठीक है, एंड देन इन 2011 इंडिया आल्सो पास्ड अ रेगुलेशन एंड इट सेट ट्रांस फैटी एसिड लिमिट टू 10% in oils and fats. But in 2015 this 10% limit was decreased to reduced to 5%.
And also in 2018, WHO, that is the World Health Organization, it called for global elimination of industrially produced TFAs by 2023, right? So this was another target by WHO. See, all of these institutions, they know what are the harmful impacts of TFAs. There is a risk of heart disease because of the use of excessive TFAs, high BP, or it can raise cholesterol levels also. It can reduce good cholesterol, that is the HDL also. Obesity, type 2 diabetes हो सकता है, fetal development भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. दैट मीन्स जो बेबी होता है वूम्ब में मदर के, उसकी ग्रोथ में भी दिक्कत होती है अगर ट्रांस फैट का लेवल ज्यादा है मदर के बॉडी में. इंसुलिन रेजिस्टेंस इट कैन क्रिएट, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स इट कैन कॉज टू योर बॉडी, राइट. वी ऑल नो दैट डाइट इज अ मेजर सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल TFAs, right? And what is TFA? It is partially hydrogenated vegetable oils, which is found in vanaspati, which is found in margarine. Over here you can see, right? तो ये अभी क्या हुआ, दिसंबर 29, 2020 को भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, FSSAI, उन्होंने परमिसेबल लिमिट जो है TFAs की ऑयल्स और फैट्स में उसको रिड्यूस कर दिया है टू 3% फॉर 2021 एंड 2% फॉर 2022. अर्लियर कैप वाज 5%. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3% एंड 2% फॉर 2021 एंड 22 रिस्पेक्टिवली. एंड अगेन FSSAI ने TFAs फूड प्रोडक्ट्स पे जो TFAs होते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है. फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज, राइट, टू 2% विच विल विद इफेक्ट फ्रॉम Jan 1st 2022. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा. तो ये जो नए रूल्स है ना FSSAI के, ये किस पे अप्लाई करते हैं? दे आर अप्लाइड टू एडिबल रिफाइंड ऑयल, वनस्पति, मार्गरीन, बेकरी शॉर्टनिंग्स, मिक्स्ड फैट ब्रेड्स, vegetable fat breads, etc. Okay, and major challenge over here is the rules we have passed on, but the major challenges are related to implementing the rule. ठीक है, अब ये rules तो बना दिए हैं, but major challenge आता है इनको implement करना. So how can we implement them properly? By improving surveillance, by inspecting the food premises, sampling of the food products on regular basis, regular training of officers, the health officers, upgrading the food laboratories. So this is how we can implement these decisions which have been launched by the FSSAI and our Indian government. So this was all about trans fatty acids. I hope you enjoyed this class. उम्मीद करती हूँ आपको ये class अच्छी लगी होगी. Also do not forget to enroll yourself in this summit which is going to be conducted on 20th and 1st of Feb 2021. And it's a free summit. Okay, इसमें जरूर enroll कीजिएगा. Link is given below in the description box. Do not forget to like, share and subscribe this video. Subscribe to the channel, like this video, share this video with the other aspirants, also with your family members to increase their awareness as well. The class PDF will be uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Thank you and have a beautiful day ahead.